नियम बड़ी मुझे मिल रहा है बाद में क्या होगी मेरे में ना मिलेगा भाई बस हो गया मैंने मासी को बोला था सब है को मासी ने कहा नहीं मेरे को जाना बहुत गर्मी थी आज मासी ऐसा बहुत गर्मी हम तो सब नहीं था मासी से चल रहे लोग भी नहीं जानता कि ये देखो कड़िया मुझे ना एक बार बस बहुत सारे लोग थे जो को स्वीट बॉय बोला गुड बॉय बोला लेकिन जो स्टोर में बोला वो कुछ नहीं थी इज अ वेरी गुड बॉय मेरे स्टोर में इसके मम्मी को सैटरडे में बुलाया कि अच्छे से बोलना उसकी मम्मी खुश थी उसको 43% से मिलेगा ध्रुव को और वो खुश थी उसकी मम्मी खुश थी उस खाना वो फेल हो जाए ना तो भी हो जाए और चौथा वाला तो आगे आगे कुछ नहीं घूस बीच में हाईवे टूटा हुआ भी हो सकता है बीच में हाईवे प्रवीण को 35% वाओ इधर पूछ लेना इधर क्या है उसकी मम्मी बहुत खुश थी मम्मी खुश थी आपका मेरी मम्मी खुश थी आज 7% नहीं आई वांटेड 95 वो मेरा गोल था तो वाओ क्या ऐसा 60 की प्रिपेयर करने को 70 करनी चाहिए तो 95 गुड इवनिंग गुड इवनिंग ये सर in tomorrow's class only one eager student came and explained asked me tomorrow I'm holding the class anyway for economics but not for you guys just because you are having the test and one more lecture I told them not to disturb the because I was primarily asking for you guys I told you na 10th standard ICSE economics I'll be taking Sunday this Sunday because of your exam and the other teacher I said only 9:30 to ask correctly I want to finish the course. So how are my friends? All good? Yes. अरे कैसा है? बिंदास ठीक ही है क्यों है? आज ये साधु वासवानी का क्या चल रहा था? आपको नहीं पता? क्योंकि ना समझ के मैं पूरा रोड ब्लॉक करके तो फिर कौन सा ब्रांड स्टैंड कर रहा है? 10 12 all हाँ 9 से 10 नहीं 9 से 10 का सबका तो क्या हुआ फिर? सर मुझे सर थोड़े से लगे एक वो कौन से सब्जेक्ट्स में? Not in my subjects, ना? क्या बोला फिर economics टीचर ने आपको? एक नहीं मैं तो सिर्फ क्लास टीचर से मिला मैंने बोला ओके और उसको you meant which all the subjects there? Only history and class teacher. Now tell me in geography, I had started with the last section, or still we are in that because waste management is a topic which I feel left. What was the last day you were there? What was the topic I was doing? Related industries. So transport हमने आधा किया. हाँ तो उसको finish करते ना 2 lecture है ना मेरा. So I will finish transport the first chapter. बस question है. कौन सा paper? Now I'm taking over. Then we are discussing with you. Keep it discussing. Transport. What was the last topic that I touched upon? Just check. Just start clear. No, I have completed. Just check in your notebook. Transport was tell me in the notebook or textbook what is the last topic I have completed because you have completed industries. Pura. But these girls are saying कि transfer हो रहा है. Sure. Yes. Industries is also complete. Now we have to start upon the waste management, ना? So put that heading. बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो क्या टाइम पे हाँ वो नहीं already बता दिया मैंने. अच्छा फिर से करते हैं. Second lecture में करते हैं. ठीक है? No worries. The 8 modules में से 5 modules which you are going to select, correct? 9 वो भी है ना. Take out today's part of your notebook, put the heading, some introduction, one year settle down, we will move. Now this topic many students feels it is क्या बोलते हैं can be skipping away, it is up to you.
I feel any other module can be easily substituted with this module. 3 चैप्टर है अभी तो शायद एक साल तो अभी 2 ही चैप्टर किए हम लोग ने and there are few concepts based on which this module runs and it is very easy. Like if you feel industry is difficult, if you feel it's up to you, go for this. If you feel agriculture 4th chapter there are a lot of things to learn, go for this. And then if you feel climate, अभी तो क्वेश्चन पेपर अंदर रखने बोला अभी what are you not in the mood to go out and क्या हो गया? Even out also I was a little bit late and then you were doing something else. The waste management, you see in your school they have cancelled some part of the chapter, is it? Now look here. There are 2 topics. One is that impact of waste accumulation. Go to the second one. जैसे हमारे नाम में बोला जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ो. Waste में? पूरे चैप्टर में पढ़ो. ये देखो कट मार कर second is disposal of waste. But then there are few concepts which are science based and which are very much related also. Like anybody have learned what is eutrophication? No. Biomagnification? At least suna रहेगा. There is something called Minamata disease. Then waste accumulation में there are 3 R's. वो है topic है ना? What are 3 R's? Reduce. पहला reduce. Second is reuse. Third is recycle. देखो, what is this entire topic now? Very few schools have, not very few schools, I have heard all the schools just skip away. There are a lot of new things you should learn. Like anybody have studied in science, incineration. Incineration, what is this? Neither I am segregating, nor I am decomposing, but I am burning the waste at a very high degree. Have you seen some mineral oil companies which are having tall chimneys and that the flame is continuously burning? What is that flame all about? What is that flame all about? These are poisonous gases. If it doesn't catch fire, it will be spread in the atmosphere. You know how much minimum height of a chimney of a chemical company? Any idea? 50. 100. नहीं ये तो स्काई मीटर कंपनी लोग जाएगा 11 meters 12 meters minimum रहता है and maximum 15 to 20 meters मतलब अपना जो breathing air से निकल जाना चाहिए. So what the government of India said, there are certain high poisonous chemicals, even with certain height also there are chances. So they add some combustible substance. You know what a combustible? Yes. CH4 क्या है? CH4 is methane, na? They don't add methane because we want methane gas also. They add certain substance, I don't know what it is. By the time chimney से बाहर निकलता ना, it catches fire. Why it catches fire? Because that poisonous जो है पूरा burning में निकल जाता है. How many of you know this coming Jan 14? We celebrate a festival in Maharashtra. Jan 14. मकर संक्रांति. पूरा इंडिया में celebrate होता है. In South India, I don't know, Andhra, Telugu, Kannada, सब में जाता है. 13th night ना we burn the old article. जैसे घर में old furniture है या कुछ है. तो ये dates back to that scientific time when they used to burn this unwanted materials from the companies. क्योंकि हमारा नया साल start हो रहा है. अभी I think महाराष्ट्र में भी वो farmers festival है ना. मकर संक्रांति से farmers festival. लोडी सुना है लोडी? हाँ वो ही है. फिर केरला में एक अलग नाम है उसका. तमिलनाडु में अलग नाम है. ना पोंगल है. But date तो same ही. So now we are understanding this waste management is very simple. I said that if America is very good with this waste management policy, it shows its development and it's very strong. A small country called Singapore, उसका मैं वीडियो पे दिखाऊंगा. How their country is hygienically neat and clean. कभी visit किया है? फिर भी बोला जाता है कि visit करो या ना करो, Singapore is known for its neatness and no cars, you buy the costliest of the car, should run on the road more than 10 years. I think Abu Dhabi में भी ऐसे कुछ पॉलिसी बट Abu Dhabi से chewing gum ban illegal. वो तो बहुत पहले कर दिया. मतलब chewing gum में भी waste नहीं आता है, but definitely that country is known for its waste management. So that shows how good they are. Because now you might have seen 2 dustbins in your own building. Do we have segregation policy? But हमारा तो जो रहना आता है एक ही सा पूरा dump मार देते हैं, है ना? उसमें 2 ऐसा कंटेनर नहीं है.
You go to certain foreign countries, वो segregate उधर करके करते हैं. So we will be studying dumping, open dumping, है ना? वो बंद है अभी के लिए. अभी then we are having sanitary landfills filling. Now we have Nitin Gadkari. Have you heard his name? Who is he? Road Minister. Transport, road तो नहीं बोल सकते, सब कुछ ministers के नीचे. And he is the first minister of India who has started this composting in his own building. What is composting? जो अपना recycle waste है ना आपके घर में मेरे घर में उसको आप sand के साथ mix करो 15 दिन या 20 दिन में वो manure बनता है. So what I am doing, reducing or recycling, reducing the waste. Look, any country which looks very filthy, like one of my very best buddy was in Paris for a long time, France. He said, अपना धारावी भी पारी से बहुत neat and clean, हर जगह कचरा. पारिस means ठीक है, तो बोलते इतना कचरा फैला के रखा है. फिर वो आईफिल टावर के पास जाता तो मुझे लगता है सब अंदर से किसी ने खड़ा किया है. और रात में लाइट डालने के बाद वो रस्टेड बंगा है ऐसा बोलते. मतलब ये आईफिल रहेगा हमको तो वैसे ही दिखा देगा, है ना? So that country, now you go to certain parts of what is that? Pakistan तो भूल जाओ देश है कि, and even our own part of Kolkata. Anybody? Don't mind me. There's a main Kolkata city. The main city itself is full of, and Bangladesh तो पूछो ही. In fact, I remember that Bakra Eid कुछ तो आता है ना, तो एक बार ऐसा हो कि वो लोग ने इतना बलि चढ़ाया, through water it has mixed, it has entered into Kolkata, all red color water. That much amount of they do bali and sacrifice. Certain countries like again I say Singapore, not even one animal is cut and cleaned inside that country. सब कुछ मलेशिया में होता है, कोई कचरा अंदर नहीं आता. और इंडिया में कचरा ही यहाँ से ही निकलता है, पैदा हम ही करते हैं कचरा. So this chapter looks very boring and very, you know, and many teachers say मत करो, but I strongly advise you. मेरा lecture 2-3 होने के बाद please attempt this. One, questions are not very difficult. Two, very few SST teachers will have a deep knowledge of this. And three, choices are not so many that you need to burn the lights in your eyes. इधर से आएगा कि कुछ नहीं है, वही घुमा फिरा के वही. Understood? So put that in. I give you introduction. Then फिर textbook से पूरा करते हैं. हाँ, right now. First topic is what? Impact of waste accumulation. So write like this. For the first volume, it is impact. Intro. Let's yeah. I'll go a little bit slow because marking से कुछ ज़्यादा करेंगे हम. ये पूरा नहीं है. सोर्स तो आपका मैम ने ऐसे कुछ कैंसिल नहीं बोला है ना? ये ओनली 7 वर्ष को नहीं बोला है. No problem. नहीं यार. कौन है यार तेरा? I'll put it this side. उधर नीचे ना maximum. ताकि हवा थोड़ा सा सर्कुलेट हो जाए. Slow रहा. Under this topic, that is impact only. I don't want to repeat that word. Under this topic, start writing. Spoilage of landscape. Spoilage of landscape is of prime importance. Either है. Don't allow me to repeat that same line. Prime importance. Now let us hold it for here. Anybody could explain to me what is this spoilage of landscape? वो ऐसे बेकिंग्स में डाले दे रहा है. अच्छा, अब फिर जाओ landscape. हाँ, वही landscape. The landscape मतलब like in Jammu and Kashmir in गुलमार्ग में ऊपर माउंट लिटरिंग नहीं करना चाहिए, spoils the landscape. Very good idea. Not idea, it is the fact. हाँ. Open. Yeah. No, open dumping. आप लोग ये मीरा रोड बैंडर सुना है? कोई गया भी है कि मैं तो फिर नहीं. ये पनवेल का, I don't know which section of the city was selected as dumping. तो जितना भी नवी मुंबई वाशी से कलेक्ट होता था, ये पूरा वैन जाता था, वो जगह पे लेके डाल करके आता. In Kharghar, I've seen this, what is that? Panvel PMC, na? Panvel Municipal Corporation.
उन्होंने एक बस स्टॉप एकदम चकाचक बना के रखा है, मुझे लगा सर कारगिल में बना है। तो अपना एनएमएमपी का बस स्टॉप ऐसा लगता है कि खंडर बस स्टॉप है, वो एकदम लाइट्स लगाया है, एकदम ऐसा लग रहा है कि यू नो ना पीएमसी इज सेपरेट फ्रॉम एनएमएमसी। एनएमएमसी इज एक्चुअली खंडर, वो बेलपड़ा जो एरिया वहां तक एनएमएमसी, उसके आगे पीएमसी स्टार्ट होता है। व्हाट इज पीएमसी? तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये टारगेट रहता है, रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, रिड्यूस नहीं, स्टॉप दिस प्रॉब्लम। तो लैंडस्केप मतलब कुछ जमीन है या ओपन फील्ड है या जो भी है, उधर जाके डंपिंग कर करके वो क्या बोलते हैं ना, हीप्स एंड हीप्स ऑफ गार्बेजेस। Then what will happen? Then you know our animals. Which animals? Rats, mice, then dogs, or yeah, crows. है ना? Have you heard about the science scavengers? Maybe. Sir, vulture. Very good. Vulture is the first. Eagle तो हाँ, eagle is also a scavenger, but eagle आके इंसान के इसके साथ घूमता नहीं. Vulture is big. So microorganisms in the oceans. हाँ, hawks. It is not a hawk. Hawks. SBL. Sir, hyena. नवी मुंबई में भी क्या मैं तो पूरा महाराष्ट्र में spotted hyena you are saying ना? So लेकिन vultures बहुत rare हो गए. हाँ, vultures are there. So now you understand landscape spoilage means it is human action. We are destroying what? We are destroying what? The landscape. It's not an agricultural land. So there are many plots in the present place where I am standing as NA plots. Have you seen what is NA plots are? Non-agricultural plots. The builders do not get the permission to erect their building if it is a A plot. A plot means of agriculture. तो आपको पहले सर्टिफिकेशन लाना पड़ता है कि ये नॉन एग्रीकल्चरल है। नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट सी। अभी मुझे याद है वी यूज्ड टू स्टे दैट पार्ट ऑफ सनपड़ बिफोर दिस वाज इट, मुझे अभी भी याद है पूरा मार्ची जंगल वो ग्रासेस उगा रहता था। सिर्फ एक बिल्डर आया था शाहरुख ना, जो आपको पाम बीच से उतरते समय दिखता है। We were inside our colony, so they used to sell the land here 850 rupees per square feet. Only 850 rupees. The cheap jungle में जाके now you know per square feet 850 में मिलता है अपने एरिया में। अरे बाबा हाँ, वो उससे भी ज़्यादा है। I can say अभी ये जो 2-3 टावर आ रहा है, I personally want to shift my house from one good building to here. जैसे कुछ नहीं सर, 3.5 करोड़ बुकिंग है, आप कर लो। 3.5 हाँ करते हैं सर। 3-4 साल क्या, अभी वही प्लॉट वही फ्लैट आई एम गेटिंग इट 7 CR। अभी 10 है सर। हाँ मतलब 7 से स्टार्ट करते हो, जस्ट 4 years के अंदर इतना। तो इमेजिन व्हाट आर वी डूइंग विद द लैंडस्केप, वी आर स्पॉइलिंग इट, बट हियर इट इज नॉट स्पॉइलिंग, हियर वी हैव कंस्ट्रक्टेड। एंड आई थिंक अपना एरिया में सिर्फ गोल्ड शॉप भी नहीं है, या है क्या इधर नहीं है, वो तो इधर है ये बिल्डिंग में, बट नॉर्मली देखो छोटा सा एरिया में वी हैव डन ऑलमोस्ट नॉट वी एनएमएमसी हैज डन केयरफुल प्लानिंग। देखा under the bridge also that children are playing there, you might have seen. No other in Navi Mumbai I have seen that, and it is free of cost also. It is very beautifully done. वो pigeon net लगा दिया, 24/7 children are playing, and I think और भी एक garden play एक हमारा एक friend कम बंदा है वो fighting कर रहा है कि एक ही garden नहीं और एक garden भी चाहिए। So what are we doing slowly and steadily? We are reducing the problem of which landscape? Spoiling. समझ में आ रहा है? Even that Moraj area के जो सामने वो जो fair लगता है, every time this is a high cost bidding. खारगर में भी एक जगह है उधर जो हमारा यूपी के पीछे लगता है, बट उधर बहुत रेयर देखा है। बट इधर देखो दिवाली के पहले कवरेज कैंप आ जाएगा, handicrafts, handloom, so many things, and people come from far distance। नन दो landscape में कुछ है क्या? But look, NMMC is making careful use of that landscape. Understood? Continue with the second point. It simply means large scale accumulation of. It simply means large scale accumulation of garbages and wastages or waste. Garbages and waste onto, not into, textbook words also. Left
left over, एक ही word, or vacant, land away from the main city, land which is away from the main city, full stop, away from the main city. Second or third point, it leads to permanent damages or spoilage. Of these landscapes, acting as a breeding ground for, which are the animals we can say? Rats, acting as a breeding ground for rats, mice. Am I correct with the word mice or mice? You have Mice. to write it. Rats, mice, and other rodents. rodents and other rodents. Check with them. And other rodents. Rats and another. And other rodents. Easy spread of. Continue. Easy spread of. This word I think contagious disease. Contagious. क्या है? So the spread होती है. तो क्या होता है? Contagious disease. You are explaining a person who doesn't understand Hindi. How will you explain? Contagious disease. Disease which can cause you to फैलने वाली. So Who doesn't know Hindi? You explain. Sure. It's a अगर आप दूसरे person को I said छूते who हो. doesn't know Hindi? That is a. That's a communicable disease. Very good. The word is communicable. How many of you while sneezing has this bad habit of covering your mouth like this? Bad habit. Because good habit. I'll touch him, or I also that's it. But this COVID has made many people to be very. अभी कोई करता है क्या? चलो से हाथ धोए चल निकल और एक दिन चल देख सर थोड़ा तो हाथ भी नहीं रखा. आज सामने वाले के पास दे दी क्या रख ले फ्री में. But you see this, I have seen in flights as well as certain places, so even a small sneeze, and you can see this other citizens, I don't want to name, they will see Ajit, they are doing your biggest sin. And they'll have that face somewhere down, and छोटा सा sneeze करेगा, and 10 बार sorry बोलेगा. और हमारे यहाँ पे, बोले क्या है? जो करो भाई, करो. मतलब पूरा मेनू तो बाहर है ना? And imagine in a flight, one European is sitting and 2 Indians are going to take a flight. Literally had happened. And that one British fellow is sitting is, 8 घंटे के लिए 2 इंडियन ने जो खा के उसके साथ सत्यानाश किया रहेगा, और बेचारा सीट भी मांग रहा है इधर उधर, but flight is full. एक उधर कुछ है क्या? जो स्टार्ट कर, वो भी ठीक है ऐसे नहीं दूसरा वाला. फिर ये आया वो खाते जा रहे खाते. And this British fellow every time sorry sir. ये बेचारा बीच में बैठा है. And फिर सोचे उसका क्या हुआ रहेगा. बोले Indians too good. बोले तुझे करेगा अरे ऐसे ही लगेगा ये वो चालू है. And whenever this dust that वो collect करने आता है ना, you see where we are sitting ना Indians, lot of things we throw. ये भी लेके जाए. इधर सोले क्या travel करने आए कि खाने पीने वही है. वो 2 लाख का टिकट है चल खाते हैं. हाँ मतलब मेरे साथ भी हुआ है 1,25,000 1,35,000. तो I also try to वसूली but इतना भी नहीं जितना खाओ क्योंकि एक तो फ्लाइट है. And I hate to use that particular ऐसा dump खुलता है अंदर जाता है दूसरा तो जगह है. ट्रेन में चलो फिर भी ठीक है हम चल सकते हैं इधर उधर. फ्लाइट में वो भी नहीं. So you see even that collection of that particular garbage in a flight. देखा how beautifully these air hostess collect and when they parcel and throw it or dumping. And अपना जो laboratories है मैंने सुना कि
जो यूरिन फैक्टर है वो सब तो लोग कन्वर्ट ही करते हैं, तो कुछ कन्वर्जन होके जब वो लैंड होता है तो उसको निकालते हैं. So everywhere we have seen this word is very easy for our Indian community fellow. Why it is very easy? Because we are popular, contagious, है ना? हम लोग कभी ऐसा लगता है कि मेरे वजह से उसको लग पहला तो पहला मैं क्यों? 90% of the COVID cases in certain European countries, patients were not allowed to come out of their house. Only phone or treatment. इधर थोड़ा जुकाम या कुछ हो गया तो मुझे कोविड हो गया, चल इधर चल उधर चल. और मैं ब्लड टेस्ट करने उधर गया है, जो भी टेस्ट करने गया, I was very normal, but I met with some hundreds of patients who are already, फिर मुझे भी लगा दिया. ये हुआ है इंडिया में, कोविड में हुआ है. Whereas our own Indian actor, उसका नाम भी बोलते हैं, he was in main heart of London. He was suffering with I think second or third level of that COVID, but he was not allowed to come out of that. So उसने बोला मैं मारते मारते लंदन से भाग के बाहर आया. फिर डॉक्टर सिर्फ फोन में ही बोलते नहीं आने का तू. चाइना में जाएगा तो एक लेवल आगे. You know what is the Chinese government did? तेरा जो मेन डोर है ना उसके ऊपर ग्रिल जैसा लोग लगा के वो कीला मार के चले जाते हैं. विंडोज तो छोड़ी तो हाँ कोविड का टाइम में ऐसे क्या मारो अंदर बाहर मत. Can you imagine our doors and windows are, है ना, मोदी जी का बोला जाओ अब तू ग्रिल मार के आ. काय का ग्रिल, मैं तो विंडो से कूद के निकल जाएगा. So they are spreading which diseases? समझ में आया? Is this point very clear? Now read that line and see. Is it easy for you to learn? Because they'll ask you, what do you mean by spoilage of landscape? That is what I given. चलो नेक्स्ट लाइन. थोड़ा नोट्स देता हूँ, है ना? Then we will exactly go with the textbook. Every bench is having textbook. Is anybody without the textbook? Try to bring the textbook for these two modules. ना उसी से करते हैं. हाँ, विश्व भी है, वॉल्यूम में भी है, पर थोड़ा कम है. Next point. The main or the root cause. The main cause or the root cause of this phenomenon. Which phenomenon? Spoilage, is open dumping by the civic authorities. Civic. तो हमारा civic authorities का नाम क्या है? NNMC, है ना? By the civic authorities. Sir, civic authority. More than one. अब ये NNMC है, कारगर एंड पनवेल PMC है, बॉम्बे से तो BMC है, और दिल्ली जाएगा तो मैंने सुना DMC है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और तो प्रेस उनका काम है, वो अगर ठीक से ओपन डंपिंग नहीं करेगा ना ये प्रॉब्लम नहीं है. में रेस्पेक्टिव अथॉरिटी होना चाहिए. क्यों रेस्पेक्टिव नहीं है? एक ही अथॉरिटी है जो सिविक कॉर्पोरेशन करता है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं, किसी का नहीं. पहला ब्लेम जाएगा NNMC के ऊपर जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट. These open dumps. Authority. Full stop. These open dumping. Next point. Not only. These open dump not only releases foul smell. क्या आप लोग कभी ये एरिया में जाते समय रहा है जब वो अपना वो जाता है वो वैन, उसका नाम क्या है? हाउ गार्बेज देखा, और वो कैसा स्मेल देता है. बट हैव यू सीन दोस कार्यकर्ता भी नहीं होते मराठी में काय म्हणतात रे मराठी में ते मुलाजिम ना जो उर्दू वर्ड है या हिंदी वर्ड है. Those people they do not even wear gloves. I have seen. Forget about even the what is that? वो ताकत की तरफ चढ़ता है और वो कचरा उठाता है, ये फेंकता है. तो एक बार मैंने भी कभी बात की मेरे बिल्डिंग में जब आता है, कुछ नहीं सर हमको तो आदत है. स्मेल है किधर से आ रहा है? तो उसी के साथ का उसी ने वो स्मेल का सेंस ही रहेगा. अब यू एंड मी आया क्या है ना, अपने ही कचरा उठा के जरा, फिर वो ऐसा बिहेव करेगा या करेगी जैसे कि बहुत बड़ा तू स्विच का है.
तेरा कचरा भी उसी में. And we have one hospital, no? What is that hospital name? उसके लिए एक बायो हजार्ड वो अलग से आता है. What is that van taking? Syringes, वो stain वाला blood stain वाला cottons, and those garbages are highly dangerous. And वो जितना भी medical garbages है ना वो पूरा incineration में जाता है. What is incineration? वो मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ. They are huge, and the temperature I heard starts from 1500 to 2500 degree centigrade पे उसको गर्म करता है. गर्म कर जल ही जाता है. And then that's converted into waste. Okay, चलो that's enough. Let's start reading. There is one paragraph called pollution. क्या लिखा? Not only releases foul smell but also creates a negative impact over the city and the tourist activities. You tell me, you might have went with your family, friends, relatives. फिर उस एरिया का कचरा पट्टी देखकर फिर बोले ठीक जिंदगी में मैं कभी जाएगा. Indian cities, anyway. Delhi, Bhopal, कश्मीर, गुजरात. तू तो बोला तू गया क्या उस एरिया में? अच्छा व्हाट है गुजरात में किधर है? अहमदाबाद. ना आई एम नॉट गो. He is correct. गुजरात. Delhi is one place. अभी ये जो winter start होगा देखो the temperatures are severe. ना I haven't gone. I'm asking. आपको लगता है कि हम टूरिज्म के लिए आया और ये कचरा इतना है ये टेंपल वाला उसमें बड़े अच्छा who is responsible for that? Can we blame that civic authorities only? Who is responsible? It is you and me. Like no government is perfect if majority of the citizens are opposite. है ना? There was a country which was known as a peace loving country in the world. Not a single news which used to come on the channel. Not a single. It was the country called Canada. But can we say today? नहीं सर सरदार वाले तो उधर ही रहते हैं. And now my own near and dear relatives are moving out of Toronto. Almost in Vancouver also they are there. बोलता है government ने इतना tax बढ़ाया, facilities zero कर दिया. ये कौन सा शर्मा है जो comment channel चलाता है? He has big restaurants. When he was to visit that restaurant, some 3-4 people fired him point blank. ये भाई साहब बुलेट से बच के बाहर आए. बहुत पैसा भाई साहब के पास है ना. अब वो उतना ही चार्ज करते हैं जितना सलमान खान अभी कौन सा स्टार्ट कर गया एपिसोड 17 नहीं सर वो फन टाइम में ट्विंकिंग काजल से नहीं बट ये कौन सा सीरीज है बिग बॉस का कौन सा सीरीज है 19 होगा. एक भी सीरीज मैंने लाइव क्या मैंने तो देखा भी नहीं. सर बहुत but it was started by Shilpa Shetty when she took part in that London में एक पहला हुआ था. अबे तो इंडिया में ये चल रहा है. And I heard he charges minimum for one shooting है. Mr. So and so बंदा भी मुझे लगा कैसे दिखता है. 3.5 to 5 CR for one episode shooting. और रेगुलरली तो रहता भी नहीं ना. कभी-कभी वो ऐसा आता है और जाता है. सल्लू how to be a part of Big Boss. That is उनका रिमोट वो बंदा लोग हैं जो कौन है आपको मालूम नहीं पड़ेगा. They justify the names. इसको मैं अंदर क्यों ले रहा हूँ. फिर मैंने सुना वो भी देते हैं. तब जाके इनका नाम अंदर घुसता है. और पार्टिसिपेट. इसको जाना है. नहीं ना. मैंने इतना आसान भी नहीं है. इसको क्या बेसिस पे अंदर लेकर के. होता कैसे वो वही जो ज्यूरी जो है ना वो बाहर बोलते नहीं है कौन है ज्यूरी. और वो आपका नाम है ना 3 से 6 महीना पहले वो लोग रखता है. फिर आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं. पर इंटीमेशन आपको ऐसा आता है जैसे कि वो प्रेसिडेंट नॉमिनेशन अवार्ड कैसा आता है वैसा. और आमतौर पर आपके लोगों को ऐसा लगता है कि करोड़पति बन गए. तो सबको है कोई एक ही है ना उसमें विनर. पता नहीं सर किसका. मैंने तो अभी तक इतना सारा एपिसोड में एक भी बिग बॉस मैंने देखा भी नहीं. मतलब I heard they will cut off you participate from the entire world. No communication, nothing. I think 45 days रहता है. सर बचपन में मैंने हिंदी वाले 4-5 सीजन देखे. 45 days या 60 days आप उस चैम्बर के अंदर So, and you are wearing a small bag or it's a bag speaker on the camera which will observe you 24/7.
एंड उसमें से कोई एक विनर है, एक दूसरे को गाली गलौज चलता है, मारपीट चलता है, तो लेडीज का तो कुछ ही मत क्या मराठी वाले सारे देखे हैं मैंने। ऐसा। तो let me bring you back to the topic. If I say it is our city is like a big boss environment. Why it is a big boss environment? तूने कचरा फेंका, चल अभी मैं बिल रख, तेरा बिल्डिंग हमसे भी साफ कैसे है, ये अपना कचरा उठा के उधर डालता है ना, ये कुछ नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं। I remember that G20 का समिट जब दिल्ली में हो रहा था, इधर दिल्ली 90% of the old Delhi was covered with that canvas cloth, क्योंकि जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतर के वो बड़े-बड़े फॉरेन लोग आते थे, तो they used to ask what is this, तो मोदी ने बोला रहेगा green walls। इसी यूरोपियन का ग्रीन वॉल के पीछे क्या है, कचरा पट्टी है, मान देख चुपचाप नीचे चल। तो आधे से ज्यादा बोल दिया, हमको तो कैद कर दिया, तो फाड़ के निकलो वहां से। सच में हुआ? हाँ सच में किया था। और मुंबई में जब हुआ तो धारावी एरिया को लोगों ने पूरा घेर दिया था, वो पेंटिंग करके बोला दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द सिटी, अंदर जाके। सर लेकिन क्या किया कैसे, बड़ा बॉल लगा दिया? अरे वो अभी हम लोग ये तुम लोग गरबा खेलने के लिए जाते से वो कैसा वो लगा अच्छा हाँ वैसा, अच्छा। और पेंटिंग कर दिया बाहर से, ऐसा लगता है ब्यूटीफुल, अंदर से पूरा कैसा अपना वो कौन है केजरीवाल वो शाउटिंग ऐसा कैसा, हम दिल्ली का ओरिजिनल रूप दिखाना चाहते हैं, दिखाना है ना। तो whenever we discuss this problems ना, I remember India is the best example. अभी ये दीपावली आने दो, High Court of this Delhi have already banned firecrackers. हाँ, और अभी वो लोग ने बोला ऐसा firecrackers बना जिसमें साउंड भी नहीं आता, वो धुआं भी नहीं आता, हाँ, बलि नहीं बनेगी, हाँ ऐसे ही है। You go to Singapore in the month of Feb, वो उनका जो Chinese New Year आता है, मैं personally भी 3-4 साल उधर काम किया। Deepavali you never celebrate. Lighting festival scheme is too good. Now firecrackers में आवाज ज्यादा आता है, ना उसमें धुआं ज्यादा आता है। फिर कौन सा factor? That is the only country I have seen dogs will never bark. क्यों? Because they are injected with certain vaccine or something which does not allow the dog to bark. Noise pollution होता है। ये कौन सा dog है यार? हाँ? I remember a very good friend of mine. She is a local born and brought up, but she was from Malay. उसके बाद दो हस्की था, जब भी वो आती थी ना हस्की तो ऐसा करके उसको मस्ती बोले क्या तेरा डॉग कभी बात नहीं करता, नो नो रियली इट्स नेवर डेड वेरी साइलेंट, दो बोले क्यों साइलेंट है, इन सिंगापुर नो डॉग बार्क, नॉइज पोल्यूशन यू डोंट अंडरस्टैंड। बाबा फिर भी इंडिया में मत है ना, जब हमारा पापा या मम्मी जोर जोर से चिल्लाते करते देखते हैं, इससे तो अपने मामी का बस कर क्या बोला? नहीं अच्छा अच्छा चलो चलो। When they buy the even a table fan, na, they will come and ask how much decibel does it make noise. हाँ they like that. हमारा घर में ग्राइंडर चलता तो हमारे नेबर ही चलता है ना, क्या चलता ग्राइंडर, बैठ सेल ग्राइंडर ऐसे ही चलता। Imagine my kitchen is attached to the bedroom of my neighbor. Oh, and the neighbor is having a sleep in. क्या हुआ? Vibration, अरे कुछ नहीं, बाजू के घर पे। And speakers तो फिर पूछना ही नहीं, है ना? As if I am buying a remote for the TV which is played in my neighbor's house. और मैं चैनल चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ? अरे मैंने सिर्फ रिमोट ही कर लिया। 7:30 के बाद अगर any noise pollution in your HDB where we used to live ना, 2 police cop will come within half an hour to your house. क्यों है? Neighbor complaint, too much of noise. What TV reduced? ये तो फिर भी ठीक है, चलो टीवी चैनल। हमारा जो नेबर था वो तो साउथ इंडियन, उसके बाजू में एक मले था, तो दैट न्यूबॉर्न चाइल्ड जनरली मालूम है ना, न्यूबॉर्न चाइल्ड 2-3 महीने का था, तो वो चला जाता। सो दे केम टू वार्न दैट फैमिली, तेरा न्यूबॉर्न बच्चा इतना चिल्ला नहीं करेगा। चलो टीवी का तो हम लोग वॉइस रिड्यूस करते हैं, अभी न्यूबॉर्न बच्चा को क्या समझाएगा? फिर वो अंकल मिला मुझे, बोले क्या हो गया? हाँ सर इंजेक्शन लगा दो। डॉग इंजेक्शन बोले क्या हो गया? पुलिस आया, अरे कुछ नहीं, वो माले वो अंकल बोला कि मेरा बच्चा चिल्ला था तो उसको नींद नहीं आई। तो अभी क्या करता, मैं ना बच्चा को तीसरा बेडरूम में लेके चलता रहता। स्टोरेज कम। बोले ये भी है, आप अभी अभी आया है, रुको इधर क्या क्या रूल्स है। If you are having that, what is that cone or something that you eat? If you are eating in a government building and if you are trying to वो cone का वो रखना क्या होता है? मेरे McDonald's में क्या होता है? मिलता है कोवन।
कोन के अंदर ऐसा आता है ना वो Softy. हाँ सॉफ्टीज मैं मेरा नेफ्यू को लेके दिया एंड आई वाज एंटरिंग द गवर्नमेंट बिल्डिंग ये भाई साहब दूरी की जगह तो रुक गया बोला नहीं नहीं क्या बस चल रहा है और सॉफ्टी लेके जाना अलाउ नहीं ये खाने की चीज है उसी दिन तो अलाउ नहीं है और बॉम्बे से आए आपको साले तुम लोग तो नाखून से नहीं बना के रखे एमआरटी में अलाउ नहीं है खाना पीना बसेस के अंदर अलाउ नहीं है खाना पीना हमारा रेलवे स्टेशन में जाओ वड़ा पाव से लेके हो क्या नहीं मिलता है ना अभी द रिसेंट एक्वा लाइन स्टार्टेड बाय मिस्टर मोदी इज एग्जैक्टली लाइक इन सिंगापुर दो डोर रहेगा एक डोर जो अपना रेलवे स्टेशन का रहता है दूसरा डोर अंदर का जो एमआरटी का दोनों डोर एग्जैक्टली खुलेगा तो आप अंदर जा सकते हैं अभी एक्वा लाइन खोला ना मोदी जी आके फॉर दिस व्हाट इज दैट एयरपोर्ट में भी आएगा और उधर भी रहता है ना दैट इज एग्जैक्टली सिंगापुर but I have this bad habit of whenever I used to move away na I used to have one coke and one burger फिर मेरा दोस्त को छेड़ता था कभी ना कभी पड़ गया बोला चुपचाप वो बस में सेकंड टॉप में बैठने का कैमरा जरूर है and that driver can see ये ऊपर बैठ कर क्या है एक बार मुझे sir you found to be having some drinks बोला coke and burger also a BP problem I cannot next time don't eat can you imagine अब BST में बैठा है और आप कुछ खाते पीते आपको डर लगा तो तुम्हारा उधर दे वेरी पोलाइटली दे आस्क यू एंड वेरी पोलाइटली आपको मालूम भी नहीं उसने पुलिस को बोल दिया जिस स्टॉप में उतरेगा ना पुलिस आपको वैन में बैठाएगी तुरंत ले एंड व्हाट यू आर डूइंग नथिंग यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोक और पेप्सी व्हाटएवर यू जाए करते थे लेक्चर के बीच में कर सकते है ना so these are the things they are avoiding so that you are not adding to the pollution okay chalo you read pollution I need some water Word pollute means to be इसको बोल दे pollution page number Page number 256. yeah correct The word pollute means to degrade or to contaminate. Pollution is caused an unfavorable open bracket the red line का पूरा हाँ modification of the natural world caused. hey is it modification slowly modification of the natural world can you modify the natural world Yes. what is natural world by the way एक लड़के ने लिखा before I born the world was natural and beautiful after I born my papa only complained कि कहाँ से वे तेरा ही डीएनए से बनता है मतलब जहाँ भी जाएगा हम लोग देखा चॉकलेट काट के रैपर देता वड़ा पाव काट के वो उधर डाला और सर जो भी ये खाएगा तो इधर इधर फेंकता रहता है मुझे बहुत मजा आता है और वो गार्बेज वैन बेचारा गवर्नमेंट ने कचरा करके लगा उसके अंदर झांकते देखो तो खाली है पूरा गार्बेज वैन के बस है सर ये इंडियन क्यों क्या लगता है नहीं ना चलेगा हम बात करने से कैरी ऑन हां Cause entirely or partly is due to direct or indirect actions of human beings. underline that word direct or indirect अगर हम टक्सर डस्टबिन देखो फिर वो इंडियंस ने डायरेक्टली जाएगा Pollution is caused by human activities like addition of toxic chemicals to the atmosphere. क्या एटमॉस्फेयर क्या है To the atmosphere environment. It is also caused by other substances which may not be particularly dangerous to the planet and predators. don't talk hey it's a very interesting topic don't talk let us explain and answer please बाद में Might have adverse influence on the environment. Accumulation of waste is probably the most visible form of pollution. Every year, human beings dispose of billions of metric tons of ये waste. टोन्स नहीं है tons है what is that about Oh, tons sorry. Tons of solid waste. The handling of solid waste is a problem because most disposal methods cause harm to the environment. Both open dumps and landfills may contain toxins that seep into the soil and the water bodies and cause soil and water pollution respectively. yes The uncontrolled burning of accumulated waste creates smoke and other air pollutants that release toxic substances into the environment and cause air pollution. हाँ Cabbages and stray animals invade the open garbage dumps and spread the waste you over don't the have any area. different experience है उसको बताओ ना कौन सा अच्छी सर्चिंग अच्छी Page 27 वो line ही नहीं पता चलता। हाँ वो बता दो उसको थोड़ा पैरा स्टार्ट कर रहा नहीं ये why didn't you come for our economics class अभी हाँ ये why didn't you come for our economic class
sick. Now, I heard you were a Jain. When did you become sick? I was sleeping. उसको sick बोलते हैं. तो मतलब whenever you night में you become sick. How beautifully shameless you are. हाँ? 10th standard में अगर एक लड़की ऐसा बोलती है I was sick, फिर उसको और थोड़ा explain करने मिलता है I was sleeping, और थोड़ा explain करें तो क्या बोलेगी? No, sir, I was like, if you ask what kind of sick I am. So I just said I am sleeping, sir. Nothing. So you are sleeping sick. No, I was sleeping one day. After So I don't get hyper shocks to my heart. The uncontrolled burning of accumulated waste creates smoke and other air pollutants that release toxic substances into the environment and cause air pollution. Scavengers and stray animals invade the open garbage. What is the difference between a scavenger and a stray animal? So stray animal कुत्ता होता है, scavenger. बहुत होता है, मुझे देखो. You say scavengers have 4 legs and scavenger कुत्ता होता है. Is crow a scavenger? Yes. How do you know? Sir, because he is dead. How do you know? In fact, in biology, if you have studied, that is the only bird which is called as versatile. Why crow is a versatile bird? it's just scavenger and It can eat anything and everything. Dead rat वो भी खाता है. मैंने देखा इंसान का वो सारा वेस्ट किया वो भी उसमें से नहीं खाता है. Sir, hyena भी ऐसे ही. फिर आप लोग हिंदू उसको पूजा करते हैं. भाई इसको आज तो जब ये रात का डिनर चल रहा है, सुबह आते तेरा नाश्ता भी है ना? क्योंकि हम आई थिंक शनि भगवान का वही हम लोग बहुत कुछ पूजा करते हैं. पर क्या करेगा वो अपना नेचर से रहा. देखो जितना भी रैट्स पड़ा है, the first bird which will come and it is the crow, है ना? Read. And spread the waste over a large area, thereby spreading germs and diseases. As well as destroying the beauty of the place. Industrial waste contains harmful chemicals, particulate matter, small particles, and toxic heavy metals such as lead and mercury. Unlike that bird, lead is also there. Yes. Under mercury, please write. अच्छा मेरा माता नीचे आ रहा है देखो आएगा. I will show you the video. उसी में है ना? नीचे. अच्छा please everyone watch this video. Yes, sir. Mena Mata disease. Now mercury wala, you love it. अरे रुक तो सही. Setting तो ऐसे कर दो. Yeah, there was one of the bay in Japan which was called as Minamata Bay. है ना? And then you should watch what has happened to the human being during this disease. Oh, यही डाल देते. ये actual videos. Be quiet and watch this. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So the sound. ऐसा नहीं. बाकी तो आके ऊपर बैठ सकता है. This is very late they have discovered कि ये क्या हो रहा है. Till that time they were clueless कि what is happening, and you will see it. Identified that it was mercury causing the disease, a heavy metal that was transferring from seafood to the people that ate it. When they analyzed
local waters, they found large quantities of mercury in the fish, seaweed, and everywhere else. Where the concentration was highest? Right around the wastewater canal of the Chiso factory. In an attempt to deflect the ensuing scrutiny, Chiso Corp redirected its waste to the Shiranui Sea, where the disease began to spread to other fishing villages along the coast. The Chiso factory refused to cooperate with the Kumamoto research team, withholding information about their industrial processes and funding research of their own into alternative causes of the Minamata disease. But as this began to affect the previously fruitful fishing business of the village, the Minamata Fishing Cooperative protested and demanded accreditation from Chiso Corp. After an intense back and forth, the factory agreed, stating that they would swallow their tears and accept, paying the fishers 20 million yen. News of this caused other affected villages to begin seeking compensation as well, with several fishing alliances heading to the factory to demand it. Chiso was eventually forced to give several collectives accreditation of their own, and was ordered by the Ministry of International Trade and Industry to install new wastewater treatments at the factory. They installed a cyclator purification system, but in the following years, the installed treatment showed no signs of lowering the level of mercury being released, and the disease continued to spread. Meanwhile, in the village, Minamata patients became victims of discrimination and ostracization. The disease was at first suspected to be contagious, causing patients to be isolated and have their homes disinfected. Yet even when contagion was disproven, Families Mutual Aid Society, who began a sit-in at the factory, eventually earning a credit time payment of 320. Can anybody tell me what is this money and whom it is? Accommodation. So they're paying people to take care of adults per year. But what is this money to and whom it To is? take care, like people outside of Minamata. So Yeah, They were state budget to be there, not able to work. This was their livelihood perspective. it was compensation given to the families. You in exam they'll ask you, don't tell me the amount, but what was the dangerous effect? ये government के लिए सबसे बड़ा payment है. देखो, adult per year इतना जा रहा है, and this is per year for the child, and this is for the families of the dead. It is 3,20,000 yen. Okay, what is the conversion ratio of yen today? It's close to 12, 13, या कभी-कभी 15 जाता है ना Japanese, है ना? So this is the trouble to the government. एक तो disease का उनको solution मिला नहीं और ऊपर से government को इतना पैसा 1,000 yen for families of dead patients. Unfortunately, receiving this compensation caused even more of a rift between the patients and the rest of the Minamata villagers, and many even avoided seeking accreditation to hide their symptoms. As the decades went on, people slowly began to be more receptive to the struggles of Minamata victims. Eventually, the Citizens Council for Minamata Disease Countermeasures was established, a support group for those with the disease to deal with the social stigma around them. The Minamata disease continued to impact the various groups involved in the whole ordeal, from the patients and their families who were faced with both debilitation and discrimination for years before they were given any care or sympathy, to the fishermen who had their way of living damaged and continued to seek and protest accreditation, unable to safely fish again until 1977, to the local and national governments that could have responded to the situation sooner and began to rework their policies to better equip themselves on identifying and intervening on potential pollution hazards, to Chiso Corporation itself, that held back on responsibility until the cause was too clear to be avoided. They would have to pay much more in accreditation and information in the following years, especially when it was revealed that they knew their cyclator purification system would be completely ineffective all along, leading to a criminal case against the company in 1975. But even with all these different perspectives that had their own motivations and philosophies about